So basically, we are going to discuss the filling in plinth and underfloors. As we discussed earlier, some points which are backfilling in the sides of foundation, plinth, and underfloor, etc. So basically, in filling in plinth and underfloors, after the available suitable excavated materials are exhausted as backfilling, the contractor shall notify the engineer in charge of the fact and levels taken jointly with engineer in charge. The earth, marram, sand, gravel, etc., or such materials suitable for filling proposed to be filled under floors and so mentioned in the item of schedule of quantities shall then be brought or to site from approved locations and sources. It means जो भी आपका मटेरियल एक्सकवेट हुआ है, जाहिर सी बात है आप वही वापस उसमें बैकफिल करोगे ही करोगे. प्लिंथ और फ्लोर लेवल की बात जब आ रही है तो वो ये है कि वो जो भी अर्थ, मॉरम, सैंड, ग्रेवल है, ये सब सुटेबल है कि नहीं, ये इंजीनियर के और कॉन्ट्रैक्टर के आपसी कोऑर्डिनेशन से वहां पे वापस भर दिया जाता है. Next one is earth filling. The earth, soft moram, etc. So broad shall be filled up in layers of 15 centimeter depth, each layer being well watered and consolidated by approved hand or mechanical tampers or other suitable mean to achieve the required density. अर्थ फिलिंग आप जब भी करेंगे तो सॉइल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉइल जब आप एक्सकेवेट करो, जब सॉइल है उस पर कॉन्टिन्यूएशन में प्रेशर लग रहा है तो वो कंसोलिडेट हो जाएगी या डेंस हो जाती है काफी. बट जब आप एक्सकेवेट करके उसको बाहर निकालते हो तो वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है थोड़ी सी और वो पोरस हो जाती है, पोरस कह सकते हैं, या फिर लूज हो जाती है. लेकिन जब आप अर्थ वर्क करोगे तो आप नॉर्मली तो उसको छोड़ नहीं दोगे, जाहिर सी बात है अर्थ वर्क आप कर रहे हैं तो उस पर कहीं ना कोई लोड बाद में लाइव लोड आएगा ही आएगा. उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिकल टैंपर्स या फिर स्किल्ड लेबर का यूज करते हैं जो कि वहां पे प्रॉपर उसको टैंपिंग कर सके उसमें, टू अचीव द रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. नेक्स्ट है आपका ग्रेवल और सैंड फिलिंग. Gravel is required to be filled under floors, shall be single washed gravel to approved quality and size of varying from 12 mm to 20 mm. It shall be uniformly blind with approved type of soil or to obtain full compaction. Gravel shall be filled in specified thickness and shall be well watered and rammed entirely to the satisfaction of engineer. If sand is required to fill under floors, it shall be clean, medium grained, and free from impurities. The filled in sand shall be kept flooded with water for 24 hours. To ensure maximum consolidation shall be done by the contractor at his own cost. The surface shall then be well dressed and get approved from engineer in charge before any other work is taken over the fill. अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ग्रेवल या फिर सैंड फिलिंग करनी है, ग्रेवल मतलब बेसिकली आप सीधे कोर्स एग्रीगेट से लेते हैं जिसका साइज पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि उसका जो साइज है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 12 mm टू 20 mm. यूनिफॉर्म इन साइज होना चाहिए, प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए, और जिस टाइप की सॉइल है वहां पे मतलब जो उसके जिस सॉइल के ऊपर आप ग्रेवल आप बिछाने वाले हैं या डालने वाले हैं वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट होनी चाहिए वो सॉइल ऑलरेडी. उसके बाद उस पर आप ग्रेवल की लेयरिंग करेंगे. Gravel shall be filled in specified thickness and shall be well watered and rammed entirely to the satisfaction of the engineer. It is clear that जो भी gravel आप वहाँ पे लेयरिंग करने वाले हैं ग्रेवल की, वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड थिकनेस का होना चाहिए, जैसे कि था कि उसका साइज वेरी होना चाहिए 12 से लेके 20 mm तक का, 12 mm to 20 mm. It is required to fill under floors. It shall be clean, medium grained and free from impurities. जिस भी फ्लोर पे आप ग्रेवल लेयरिंग करने जा रहे हैं वो impurities फ्री होना चाहिए और प्रॉपरली कॉम्पैक्ट, प्रॉपरली वाइब्रेट, आफ्टर वाइब्रेशन उसको आप ग्रेवल को लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे. अगर कहीं पे आपको सैंड फिल करना है तो इट इज क्लियरली सेड दैट ग्रीन एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होनी चाहिए आपकी जो सैंड है. सेकेंड थिंग इज दैट
Maximum consolidation shall be done by the contractor in his own cost, and the surface shall be well dressed and got approved from engineer in charge before any work is taken over it. अगर आपको कहीं sand filling करनी है तो वो surface properly clear होना चाहिए और consolidation properly होना चाहिए. Next point है lead and lift. The lead for disposal deposition of excavated materials shall be as specified in their respective items of work. For the purpose of measurement of lead, the area to be excavated or filled or area on which excavated material is to be deposited shall be divided in suitable blocks, and for each of the block, the distance between center lines shall be taken as the lead, which shall be measured by the shortest straight line route on the plan and not the actual route adopted. Lift shall be measured from ground level. Excavation up to 1.5 meter depth below ground level and depositing excavated material on the ground shall be included in the item of earthwork for various kinds of soil. Extra lift shall be measured in unit of 1.5 meter or part thereof. Obvious lift shall only be measured, that is, lift inherent in the lead due to ground slope shall not be measured except for lead up to 250 meter. The excavation shall be measured in successive stages of 1.5 meter, stating the commencing levels. This shall not apply to cases where no lift is involved, as in hillside cutting. Clear? Next one is mode of measurement. All excavation in areas having depth more than 30 centimeter pits, as we discussed earlier, shall be measured net. The dimension for the purpose of payment shall be reckoned on the horizontal area of the excavation. For the purpose of payment shall be reckoned on the horizontal areas of the excavation at the base for the foundation of the walls, columns, footing, rafts, and other foundations, multiplied by the mean depth from the surface of ground determined by levels. Excavation for side slopes will not be paid for. Excavation in areas having depth less than 30 centimeters shall be measured as surface excavation or a square meter basis, mentioning the average depth of excavation. Clear है यहाँ से कि जो भी excavation है, जो साइड स्लोप का एक्सकेवेशन कॉस्ट नहीं लिया जाता है. सेकंड वन इज अगर कहीं भी 30 सेंटीमीटर की कम की डेप्थ पे एक्सकेवेट करना है तो वो एरिया वाइज उसको कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम वाइज नहीं करते. A reasonable workspace beyond certain dimension required for waterproofing and shuttering where considered necessary is opinion to engineer in charge will be allowed in execution and considered for payment for underground water tank, some septic tank, etc. Where direct measurement of rock excavation are not possible, volume of rock can be calculated on the basis of length, breadth, and depth of stacks made at site as mentioned. The net volume shall be worked out by reducing it by 40%, taking the voids into the consideration, and 40% as 40%. It is clear that कि जहाँ पे आपके कोई बड़े पत्थर आ गए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो एक्सकेवेशन कॉस्ट है वो वॉल्यूम में होती है या एरिया वाइज लेते हैं. अगर 30 सेंटीमीटर से डेप्थ कम है तो आप क्या करते हैं, जब बड़ी वॉल्यूम या बड़ा एरिया होता है तो उसके लिए वॉल्यूम लेते हैं और उसमें से 40% उस वॉल्यूम का रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि वो होती है एयर वॉइड्स. Similarly, to arrive the net quantity to be paid in case of soil reduction at 20% of corresponding stack of the truck measurement shall be made. The rate of excavation shall include carting and disposing and leveling the excavated materials within the specified lead. The rate shall also be inclusive of cost of all tools, plants, explosives, shoring, dewatering at various stages, labor, materials, etc. to complete the operation specified. The backfilling and consolidation in sites of foundation and in plinth with excavated materials will not be paid for separately. The rate quoted for excavation shall be deemed to have been included the cost of stacking of excavated material, conveying within the specified lead, picking of selected
stacked material, conveying it to the place of final backfill, compaction to the required proper density, etc. It means जो भी आपका इसकी कॉस्टिंग जो बनती है वो ओवरऑल बनती है, मतलब एक्सकेवेशन से लेके वापस बैकफिलिंग तक, और उसके बाद बैकफिलिंग के बाद जितना भी उस पे आप वाइब्रेटर या हैमर सॉरी टैंपिंग करवा रहे हैं, दैट्स ऑल. Payment for filling and consolidation inside the trenches, sites of foundation, pins, etc. with selected materials bought by the contractor other than the excavated materials shall be paid for separately as per the rates in schedule of quantities, which includes cost of such materials excavations. Actual quantity of consolidated filling shall be measured and paid in cubic meters up to 2 places of the decimal. Clear? As I discussed कि अगर आप excavation कर रहे हैं और वापस backfilling कर रहे हैं उसमें, उसका जो भी आपका costing आएगी, अगर 30 सेंटीमीटर से depth कम है, then it will be taken as area और 2D, और अगर उससे ज़्यादा depth है तो आप उसको LB into लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू डेप्थ करके उसका वॉल्यूम निकालेंगे, 40% रिड्यूस करेंगे ड्यू टू एयर वॉइड्स, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन बाद में कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन सॉरी, उसके बाद उसकी आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे. और ये जितना भी आपका एक्सकेवेशन वर्क है, चाहे एक्सकेवेशन हो चाहे बैकफिलिंग हो, वो सारा एम क्यूब में या क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होता है विद 2 places of the decimal. The rate quoted in cubic meter for items of excavation is deemed to include the necessary additional quantity of excavation involved beyond the plan's dimension of the work, which may be necessary to be carried out or carrying the work in an engineering made decided upon by the contractor. नेक्स्ट है आपका anti-termite treatment. Pre-construction anti-termite treatment is a process in which soil treatment is applied to a building in early stages for its construction. The purpose of anti-termite treatment is to provide the building with a chemical barrier against the subterranean termites. Anti-termite treatment, being a specialized job, calls for through knowledge of chemicals, soils, termite to be dealt with and the environment conditions in order to give effective treatment and lasting protection to the property undergoing treatment. It is therefore imperative that the work of anti-termite treatment should be got executed through specialized agencies only. It is clear that कि अगर आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना है तो वो आप जहाँ से आपका सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर शुरू होता है, आई मीन जहाँ से सुपर स्ट्रक्चर शुरू होता है उसके बिलो आपको करानी पड़ेगी, ताकि जो सॉइल के अंदर जो टर्माइट्स या जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके समाधान के लिए आप ये एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराते हैं. और ये स्पेशलाइज एजेंसी ही करती है, हर कोई ये नहीं कर सकता, और ये स्पेशलाइज्ड वर्क होता है कंस्ट्रक्शन में. The pre-constructional soil treatment is required to applied during the construction stages of the substructure up to plinth level. The contractor has to be watchful the various stages of substructure works and arranges to carry out the soil treatment in time after proper coordination with the department and the other contractors, if any, working at site. Scope. The scope of pre-constructional anti-termite treatment covers the soil treatment with approved chemicals in water emulsion in foundation, trenches or columns, plinth beams, plinth filling at the junction of the walls and floor in expansion joints, etc. in stages as detailed in the specification and the drawings. The anti-termite treatment will be carried out by as per IS 6313 Part 2 1981 or as per directed by the engineer in charge. Scope इसके में ये है कि IS
IS 6313 पार्ट 2 1981 यूज होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड थिंग ये है कि स्कोप ये होगा इसका कि सॉइल ट्रीटमेंट एक तरीके से आपका पूरा एक कवर करता है। और नेक्स्ट है आपका साइट प्रिपरेशन। इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल इमल्जन and to attain penetration, the following site preparation shall be carried out. साइट प्रिपरेशन के लिए ये सारे स्टेप जो आगे आपको बताए जा रहे हैं ये आपको पहले से ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिमूव ऑल ट्रीज, स्टम्प्स, लॉक्स और रूट्स फ्रॉम द बिल्डिंग साइड। जितने भी ट्रीज हैं और उनकी जितनी भी रूट्स आ रही हैं वो सब आपको रिमूव करनी है। सेकेंड वन इज रिमूव ऑल कंक्रीट फ्रॉम वर्क इफ लेफ्ट एनीवेयर, लेवलिंग पेग्स, टिम्बर ऑफ कट्स एंड अदर बिल्डिंग डेब्रिस फ्रॉम द एरिया ऑफ टू बी ट्रीटेड। मान लीजिए कोई एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना है या उसको तोड़ के दोबारा आपको नया बनाना है, तो वहां से आपको ये सारी चीजें जो भी उसका पुराना मटेरियल जो बचा होगा डिमोलिशिंग के बाद तो वो सारा आपको वहां से हटाना है। थर्ड वन इज इफ द सॉइल टू बी ट्रीटेड इज सैंडी और पोरस, प्रिलिमिनरी मॉइस्चरिंग विल बी रिक्वायर्ड टू फिल कैपिलरी स्पेसेस in soil in order to prevent the loss of emulsion through piping or excessive percolations. It means अगर कहीं पे सॉइल आपकी सैंडी सॉइल है या पोरस है, पोरस स्ट्रेटा आपका आ रहा है एक्सकेवेशन के दौरान, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप पाइपिंग करेंगे। कैपिलरी जो उसकी जो पोर्स होंगे वो सारे आप पहले फिल करेंगे। Next one is in an event of water logging of foundation, the water shall be pumped out before application of chemical emulsion and it should be applied only when the soil is absorbent. Clear? Fifth one is on clay and other heavy soils where penetration is likely to slow and on sloping sites where runoff treating solution is likely to occur, the surface of soil should be scarified to a depth of 75 mm at least. Clear? Next point is all subfloor leveling and grading should be completed. All cutting trenches and excavation should be completed with backfilling in place. Borrowed fill must be free from organic debris and shall be well compacted. If this is not done, supplementary treatment should be made to complete the barriers. It is clear कि जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है आपका वो ये बता रहा है कि क्लेई सॉइल है जहाँ पे या हैवी सॉइल है जहाँ पे पेनिट्रेशन काफी दिक्कत होती है पेनिट्रेट करने में या मशीन एक्सकेवेट करने में या अदर इस तरीके के काम करने में। स्लोपिंग साइट होती है, रन ऑफ है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सॉइल 75 mm तक एटलीस्ट स्कैरिफाइड करेंगे। Now we are discussing about the chemical which are used in anti-termite treatment. The effectiveness of chemical depending upon the choice of the chemical, the dosage adopted, and the thoroughness of application. The chemical solution or emulsion are required to be dispersed uniformly in the soil and to required strength so as to form an effective chemical barrier which is lethal and repellent to termites. Soil treatment. One of the following chemicals in water emulsion after approval from the engineering in charge shall be used. Soil treatment के लिए आप बेसिकली एंटी टर्माइट कोई भी एक केमिकल का यूज करेंगे और केमिकल ऐसा यूज करेंगे, मतलब केमिकल यूज करने के लिए भी वही है कि आप किस ग्रेड का यूज कर रहे हैं या डोजेज कितनी है, जैसा आपको सॉइल टाइप मिलेगी उसके रिगार्डिंग आप केमिकल और सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे। Modes and rates of application. The chemical emulsion as stated above the applied uniformly by sprayers at the prescribed rates as detailed below in the series of treatment. Clear? ये नीचे कुछ टर्म दिए गए हैं कि आप ट्रीटमेंट फाउंडेशन ट्रेंचेस में, टॉप सरफेस में और वॉल्स में और फ्लोर्स में कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग रेटिंग होती है कि पर लीटर स्क्वायर मीटर जैसे कि यहाँ दिया गया है, उसको हम अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे। In case of normal wall loading bearing structure, column pits
the treatment shall be at 5 liters per square meter. नॉर्मल वॉल अगर वॉल लोड स्ट्रक्चर है तो उस पे 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर आपको केमिकल देना है to a height of at least 300 mm. After the foundation work, the site shall be treated as 7.5 meter per square meter of vertical surface of the substructure on each side. After the earth filling is done, treatment shall be done by rodding or earth at 150 mm centers close to the wall structure and spraying the chemical with the above dose. For example, 7.5 liter per square meter. In case of framed structure, the treatment shall start at a depth of 500 mm below ground level. From this depth, the backfill around the columns, beams, and RCC basement walls shall be treated as 7.5 liter per square meter of the vertical and 5 liter per square meter from the horizontal. अगर कोई framed structure है आपका तो आप उसमें 500 mm below ground level तक उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और अगर आरसीसी बेसमेंट वॉल है तो 7.5 लीटर फ्रॉम वर्टिकल एंड 5 लीटर per square meter for horizontal surface of trenches and pits. Treatment on soft surface on treatment on top surfaces on plinth filling. Top surface of the filled earth within plinth's wall shall be treated with chemical emulsion at the rate of 5 liter per square meter, and the surface area before subbase to floor is laid. If filled earth has been rammed and the surface does not allow the emulsion to seep through, holes up to 50 to 75 mm deep at 150 mm centers, both ways shall be made with crossbars and the surface of facilitate saturation of the soil with the emulsion. Treatment of walls and treatment at junction of walls and floors. Special care shall be taken to establish continuity of the vertical chemical barrier on the inner wall surface from the finished ground level up to the level of filled earth surface. To achieve this, a small channel 30 by 30 mm shall be made at all the junctions of wall on column, with floor and rod holes made with channel up to finished ground at 150 mm apart, and the iron rod moved backward and forward to break the earth and chemical emulsion poured along the channel at 7.5 liter per square meter of the vertical wall or column surface. It is clear that कि जो wall और floor का जो junction होता है वहाँ पे आप 30 by 30 का area एक छोड़ते हैं, उसी के बीच आप जंक्शन हर जंक्शन पे 30 by 30 mm का एक एरिया आप लेते हैं और उसी के बीच आप ये ट्रीटमेंट करते हैं. Next one is treatment for expansion joints. The soil beneath the expansion joint shall be receive special attention when the treatment above treatment is in progress. This treatment shall be supplemented by treating through the expansion joint after subgrade has been laid at the rate of 2 liter per meter length of expansion joints. Clear? 2 लीटर पर मीटर लेंथ के हिसाब से एक्सपेंशन जॉइंट पे आप ये ट्रीटमेंट करते हैं. Precaution during treatment. Most importantly, there are some precautions which are used during the anti-termite treatment. Utmost care shall be taken to see the chemical barrier is to complete and continuous. Each part of area shall receive the prescribed dosage. मतलब जितना भी एरिया है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना है वो एरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो भी केमिकल आप उस पर स्प्रे कर रहे हैं. The treatment should not be carried out when it raining. जब रेनी सीजन हो या सॉइल अगर आपकी वेट है या पानी की अगर है वहाँ पे सिचुएशन तो वहाँ पे आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, वो सही भी नहीं रहता है क्योंकि पानी के साथ केमिकल आपका और रिएक्शन करके कुछ और भी चीजें बना सकता है. Next one is once formed the treated soil barrier shall not be disturbed. If by chance treated soil barriers are disturbed, immediate steps shall be taken to restore the continuity and completeness of the barrier. थर्ड पॉइंट आपका ये बता रहा है कि आप जब भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल के पोर्शन पे उतनी सॉइल की लेयरिंग कर दी जाती है और प्रॉपरली बाउंड कर दी जाती है या बाउंड्री कर दी जाती है उतनी सॉइल की एक हिसाब से देखा जाए तो अगर वो बाउंड्री अगर कहीं से भी ब्रेक होती है या टूटती है तो आप उस बाउंड्री के लिए इमीडिएट एक्शन लेके उस बाउंड्री को सबसे पहले आपको फिक्स करना होगा.
Now we are going for precautions for health hazard and safety measures. ये जितने भी हैं जो भी आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट लोगे या करोगे, उसके लिए कुछ नॉर्म्स ऐसे भी हैं कि वो जो केमिकल होते हैं वो किस लेवल तक नुकसानदेह हैं ह्यूमंस के लिए. उसके लिए दिए गए all the chemicals mentioned above are poisonous, hazardous to health. These chemicals can have the adverse effect upon health when absorbed through the skin, inhaled as vapors or spray mist or swallowed. मतलब ये मटेरियल जो होते हैं काफी खतरनाक पॉइजनस होते हैं when तो hazardous to health होते हैं. तो इनके लिए ये है कि काफी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं इनको यूज करते वक्त. और ये भी कोशिश की जाती है कि जब इनका प्रॉपरली अगर स्प्रेइंग इनकी हो गई है तो आफ्टर दैट ये अगर लीकेज है कहीं से तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो भी आप जिसके लिए कर रहे हैं वहां पे रहेगा उसको नुकसान ना पहुंचे. नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ मेजरमेंट. The payment will be made on the basis of plinth area measurement at ground floor only for all the stages of treatment in square meter. Correct to 2 places of decimals. Rate include the cost of materials, labors and all tools, plants, sprays required for the complete operation. जो भी इनका इनके एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो पूरा आपका जो रेट होता है वो सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें, वो पर स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होता है. क्लियर? So in today's lecture, we are discussed about the specification. Here, we also discussed the site preparation and other elements which are used during the making of detailed estimation. Yeah, detailed specification. Clear? In next lecture, we will discuss about the specification, which is of, as I earlier told, which is of two types: general specification and detailed specification. Clear? Okay, thank you.